सो आज बड़ी खुशी और शादमानी का दिन है Oggi è una giornata bellissima कि आज फिर खुदा ने हमें ये फजल दिया कि हम यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत को सरअंजाम दें। allora che oggi Dio ha dato un'altra possibilità di condividere la parola di Dio. आज मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इटालियन चर्च में हमेशा मैं अंग्रेजी में प्रीच करता हूँ और मेरे साथ को इटालियन ट्रांसलेशन करता है। Mi sento oggi un po' strano perché ogni volta che vado in chiese italiane predico in inglese e poi qualche italiano traduce in italiano. लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी ज़बान में आपके साथ कलाम कर रहा हूँ और मेरी ही ज़बान का बंदा जो है मेरे साथ ट्रांसलेट कर रहा है। Oggi sono molto contento che oggi sto predicando in mia lingua madre e poi la persona che traduce anche una persona dal mio nazionalità. एक दिन पहले पादरी साहब ने खुदा के खादम ने मुझसे पूछा कि आपके पास ट्रांसलेटर है? Un giorno prima il pastore di questa chiesa mi ha chiesto se ce l'hai qualche persona per tradurre. तो मैंने इनको जवाब दिया कि हाँ मेरे पास ट्रांसलेटर है, आप फिक्र ना करें। Io ho risposto che sì, io ce l'ho una persona, non ti preoccupare. और सुबह जब हम खेती से आ रहे थे तो नौजवान भाई जो पूछ रहे थे कि ट्रांसलेशन कौन करेगा? Allora, quando noi eravamo partiti dalla casa nostra, io avevo chiesto a lui, pastore, oggi che si fa la traduzione. तो मैंने जवाब दिया कि खुदा मुहैया करेगा। Io avevo risposto che Dio ci darà una persona, non ti preoccupare. और अभी शाम को यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रांसलेटर थे। Poi questa sera io ho trovato due persone che potevano tradurre. नुमान और उसके साथ हमारा नौजवान बेटा शारून है, तो वो भी खुदा के काम को सरअंजाम दे सकता है, लेकिन आज ये खिदमत नुमान सरअंजाम देंगे। Allora, queste due persone erano uno io e poi ci sta un altro fratello che si chiama Sharon, che noi tutti e due possiamo parlare un po' italiano, però oggi ci faccio io. आज हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमने मुख्तलिफ ज़बानों में यहाँ पर गवाहियाँ भी सुनी हैं। Noi siamo molto grado, ringraziamo Dio che in diverse lingue abbiamo sentito le testimonianze oggi. लेकिन आज ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। Però oggi questo è un po' difficile per noi. लेकिन मुस्तकबिल करीब में बहुत जल्दी Però in futuro ऐसा होगा कि फिर हम सब एक कौम होंगे। sarà così che noi saremo tutti con una nazionalità. और हम सब की एक ही ज़बान होगी। Poi ci parleremo solo una lingua. और वो शहरियत कौन सी होगी? वो शहरियत हमारे पास आसमानी शहरियत होगी। Allora che nazionalità sarà questo? Questo sarà nazionalità di cielo. और हमारी जो कौमियत है या हमारी सल्तनत जो है वो आसमान होगी। Allora l'abitazione quale sarà questa abitazione sarà il cielo. और हमारा बादशाह कौन होगा? Che sarà il nostro re? कोई बता सकता है? Può dire qualcuno? Gesù. Sì, sorella? Chi è il nostro re? Gesù. Nome? Gesù. Dio. re दई रे, हालेलुया। Re dei re. हमारा बादशाह कौन होगा? Re dei re. हमारा बादशाहों का बादशाह होगा, जो बनाए आलम से जितने बादशाह भरपा हुए उन सब का बादशाह। हालेलुया। Alleluia. Il nostro re sarà quello che re di re, quello che dall'inizio e fino al fine di questo mondo e rimanerà sempre più grande. Alleluia. Alleluia. Alleluia। Alleluia. बोलने कौन फोड़ते? हालेलुया। Alleluia. अपना हाथ उठाकर बोले हालेलुया। Alleluia. हालेलुया। Alleluia. इसलिए कि हम बादशाहों के बादशाह की रियाया और लोग हैं। Noi dobbiamo alzare le nostre mani perché noi siamo popolo del Dio. आज के दिनों में मैं जब थोड़ा सा दुनिया के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि मैंने दुनिया के बहुत सारे ममालिक में जाकर खिदमत की है। A questi giorni quando io penso un po' di questo mondo, perché io sono girato tanto per condividere la parola di Dio in diversi paesi, तो पूरी दुनिया के अंदर आज कलीसिया फिर से सताई जा रही है। in tutto il mondo ci sta una grande persecuzione contro i cristiani. और ये जमाना जो है इब्तदाई कलीसिया पर आया था।
Questa situazione era all'inizio, la prima chiesa che ci stava, quella situazione è uguale come la chiesa di prima. और जैसे ही परसिक्यूशन शुरू हुई थी, Allora, sulla persecuzione quando era iniziato la prima chiesa, तो ईमानदार और कलीसिया और ज्यादा फैली थी। le credenti erano cresciuti di più. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मुसीबत के आने से ईमानदार मजबूत होते हैं। Perché quando arrivano difficoltà, le fede si cresce di più. जब आप हर रोज दुनिया की खबरों को सुने, Ma questi giorni quando voi sentite le notizie del तो mondo, नाइजीरिया के अंदर कलीसिया को सताया जा रहा है, al momento ci sta un grande युगांडा के persecuzione in अंदर कलीसिया Nigeria, को सताया जा रहा anche in है, Uganda. मोजम्बिक के अंदर कलीसिया को सताया जा रहा है, Che paese? ईरान, इराक और शाम और दूसरे ऐसे मुल्क हैं जहां पर कलीसिया दुख उठा रही है और हमारे लोग जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं। Allora in Iraq, Iran e tanti altri diversi paesi ci sta un grande लेकिन वो persecuzione. अपनी जानें तो देते हैं लेकिन खुदा के कलाम को स्टॉप नहीं करते। Allora le persone perdono la loro vita però non si cambiano la loro fede. दो दिन पहले 2 giorni prima पाकिस्तान के अंदर एक खुदा के खादम है, ci sta un pastore in Pakistan, ci stava un pastore in Pakistan कि वो दहशतगर्दों के सबब से मारा गया Allora lui è stato ucciso dal estremi islamici. और गालबन कोई 2 महीने पहले उस पर एक दूसरे शहर के अंदर हमला हुआ। Allora 2 mesi prima lui aveva già servito da un attacco per ucciderlo lui. लेकिन वो उस हमले में महफूज रहा Al questo attacco lui è stato salvato, और जब वो महफूज हो गया ma quando lui è stato salvato, तो वो खुदा की खिदमत करना शुरू हो गया lui è cominciato a predicare di और più. दोबारा उसने कलाम को लिया और दोबारा काम को शुरू कर दिया। E lui è cominciato con più forza a predicare la parola di Dio. कुछ लोगों ने उसे ऑफर की E quelle persone hanno offerto a lui, तो कि आप इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, ma è meglio se tu lasci questo paese perché è pericoloso per te adesso. लेकिन उसने कहा कि खुदा ने मेरी खिदमत पाकिस्तान के लिए रखी है Ma lui ha detto no, io non lascerò questo paese और मैं perché, पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत को जारी रखूंगा। perché Dio me l'ha detto che io devo servirti qua. और आज से 2 दिन पहले दहशतगर्दों ने उसे शहीद कर दिया। Ma dopo, prima di 2 giorni, le estremi islamici hanno ucciso lui. और उसकी जिंदगी में खुदा का कलाम जो है वो पूरा हुआ। In sua vita la parola di Dio è stato completo. जान देने तक वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। Quello che dice che devi essere fedele fino al tuo morto, che io ti darò un corona della vita. आमेन आमेन आमेन। आमेन। सो ये बड़ी ऑनर की बात है हम पाकिस्तानी मसीहों के लिए। Allora questo è un grande onore per noi cristiani pakistani, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ आपको, però io voglio dire a voi questo, कलीसिया जो है la chiesa एक बदन है è un corpo. और अगर कलीसिया नाइजीरिया में सताई जाती है Ma se il corpo del Dio diventa perseguitata in Nigeria, तो उसका दर्द जो है इस कलीसिया को भी होना चाहिए। però questo dolore noi dobbiamo sentire pure. मेरा ये पूरा बदन है Questo è tutto il corpo. और अगर मेरी उंगली पर जख्म होगा तो मेरा पूरा जिस्म इस दर्द को महसूस करेगा। Se io prendo una ferita al mio dito, però tutto il सो corpo si इसी sente. तरह हमें आज उन मुल्कों के लिए खड़े होकर दुआ करना है। Allora come il nostro tutto il corpo sente il हमें dolore, अपने हाथों को उठाना है, noi dobbiamo alzare le nostre mani. हमें रातों को बेदार होकर उन कलीसियाओं और खुदा के लोगों के लिए दुआ करनी है। Noi dobbiamo pregare giorno e notte per queste persone perseguitate. इसलिए नहीं कि उन पर से मुसीबत उठा ली जाए, Per quello no che loro non devono essere più perseguitati, बल्कि इसलिए कि वो मुसीबत के अंदर कायम रहें।
Però per quello che loro ancora stanno in fede con tutta questa persecuzione. और वो अपने ईमान को छोड़ ना दे। Allora dobbiamo pregare che loro con tutta questa persecuzione non devono lasciare la loro fede. सो मैं यहाँ पर आज आपके सामने सिर्फ एक आयत जो है उसको दोहराना चाहता हूँ। Io voglio leggere un versetto dal Bibbia. Matteo primo 23. Matteo primo 23. Può leggere qualcuno il primo Qualcuno Matteo, Riccardo questo verso? il versetto Se 23. qualcuno Riccardo parla. Matteo 1, 23. Matteo 23. Matteo primo 23. 1, 23. Può leggere qualcuno? ok. La Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, al quale sarà posto nome Emanuele, che tradotto vuol dire Dio con noi. Amen. आमेन। यहाँ पर क्या लिखा है? Allora, che cosa è scritto qua? मैंने आपके सामने कलीसिया की एक दुख भरी कहानी जो है वो रखी है। Io ho portato a voi una storia di una chiesa. मैंने पूरी दुनिया के अंदर जो कलीसिया है उसके बदन को आपके सामने पेश किया है कि वो किस तरह से जख्मी है। Io ho portato davanti a voi il corpo ferito पूरी della कलीसिया chiesa. जो है वो पूरे बदन के अंदर जख्मों को लिए हुए है। Il momento chiesa di Dio è stato molto कहीं तो वो कैद की जाती है, ferito. Scusa. कहीं तो वो कैद और बंद की सोबतें झेलती है। Allora, alcuni posti questa chiesa di Dio ci va in prigione, और कहीं उसको कत्ल किया जाता है। a qualche altro posto diventa uccisa. थोड़ी देर के लिए सोचें, Pensate un po', ये यशाया नबी के सहीफे में लिखा है, è scritto in Jesaja उसकी कुछ शक्ल नहीं थी che lui non c'aveva और उसका चेहरा तो भयानक था। e lui c'aveva un faccia terribile. किसके बारे में लिखा है? Perché cosa è scritto? ये लिखा है यीशु मसीह के बारे में यशाया नबी के Quello सहीफे è stato scritto per Gesù, कि जब वो सलीब पर था che quando lui era al croce, तो जब हम उस पर निगाह कर रहे थे तो देख रहे थे कि उसका पूरा बदन जो है वो छलनी हो चुका है, allora Gesù पूरा era, बदन कटा हुआ है, quando Gesù, पूरा बदन जो है वो जख्मी है। quando Gesù stava al croce, tutto il corpo è stato ferito. और इसी तरह आज हम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर कलीसिया को देखें, Allora noi vediamo la Chiesa di Dio, il momento vediamo allo stesso modo che è stato कलीसिया की ferito. बिल्कुल ऐसी ही हालत हो चुकी है। La Chiesa di Dio ha l'attuale situazione. कलीसिया के जख्म जो है वो हमें भयानक नजर आ रहे हैं, Le ferite della Chiesa sono terribili al momento, लेकिन यही कलीसिया का हुस्न है। ma questa è la bellezza di जब Chiesa. कलीसिया दुख उठाती है Quando la Chiesa prende il तो dolore, कलीसिया बढ़ती है। si cresce di più. और पाकिस्तान में जब लोगों के घर जलाए जाते थे Ma in Pakistan, quando si fiammano le case di persone और लोगों को कत्ल किया जाता था, e si uccidono le persone, तो मैं रोड के ऊपर खड़ा होकर कहता था, ईमानदार के खून का एक कतरा एक पूरी कलीसिया की बुनियाद है। e io dicevo, io a questo punto io andavo sulla strada e dicevo sempre che le persone che sono state uccise, il sangue di loro è inizio della Chiesa. आमेन, आमेन, आमेन। ऐसा क्यों हो रहा है? कलीसिया क्यों इतनी मजबूत है? Perché la Chiesa di Dio è così tanto forte? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आयत बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी हुई है। Questo succede perché la Chiesa è tanto forte perché per quello versetto dobbiamo immaginare questo versetto. इमैनुएल, Emmanuel, Dio con noi, Dio è con Dio noi. con noi. Dio con noi. आमेन, Amen. आमेन। Amen. अगर कलीसिया दुख उठाती है तो वो इस बात के लिए खुश है कि यहोवा खुदा उनके साथ है। Ma il Dio, la Chiesa quando prende il dolore, però la Chiesa è ancora contenta perché Dio è con noi. वो उसका नाम इमैनुएल रखेंगे।
quelli prenderanno il nome Emanuele. जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। Quello significa che Dio è con noi. और खुदा में लिखा है, È scritto in parola di Dio. इब्तदा में कलाम था, All'inizio era una parola, कलाम खुदा के साथ था, il parola era con Dio, कलाम मुजस्सम हुआ, il, जिस्म लिया। il parola è convertito in corpo. तो जब उसने जिस्म लिया तो आसमान को छोड़कर हमारे दरमियान आ रहा। Quando la parola di Dio è convertito in una corpa, è lasciato il cielo, è arrivato in इसका मतलब terra, है उसने उस मुकाम को छोड़ दिया, significa che lui ha lasciato il cielo, उसने आसमानी मुकाम को छोड़ दिया, ha lasciato il cielo, उसने अपने आला मर्तबे को छोड़ दिया lui ha lasciato il posto più alto per noi और वो हमारे पास आ गया e lui è arrivato mentre noi, ताकि हमारे दुखों में हमारे साथ खड़ा हो सके, perché lui può aiutare noi per i nostri हमारी peccati, मुश्किल में हमारे साथ खड़ा हो सके। per i nostri, che lui può aiutare per i nostri problemi. उसने देखा कि हम मुसीबत में हैं, लेकिन इस मुसीबत में से हम खुद नहीं निकल सकते। Quando Dio ha visto che noi siamo in problemi di peccati, lui ha visto che noi non siamo riusciti, non possiamo riuscire da solo. अगर आप छोटे बच्चे को देखें, Quando voi vedete un bambino piccolo, अगर वो किसी जगह मुश्किल में फंसा हुआ है quando lui si rimane in qualche तो वो problema, खुद से उस मुश्किल में से नहीं निकल सकता, ma lui da solo non può uscire da questo लेकिन problema. जब उसका बाप उसको देखता है Ma quando vede suo padre, तो फौरन बाप का दिल जो है वो भर आता है subito il cuore di padre riempie con dolore e vuole salvare il suo और bambino. बाप अपने बेटे को अपने बच्चे को बचाने के लिए हर तरह के खतरे के अंदर कूद जाता है। E quel padre viene davanti a tutti i pericoli che stanno vicino al suo figlio. बाप नहीं देखता कि वहां पर कितनी गंदगी है, Il padre non vede che quanto il sporco बाप del नहीं posto. देखता कि वहां पर कितनी खराबी है, Non si vede che quanto è disgraziato questo posto. बाप नहीं देखता कि उसके कपड़े कितने खराब हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे। Il padre non pensa che se lui va in questo posto sporco si वो नहीं sporcherà देखता कि pure. उसके लिए भी मुश्किल बन जाएगी, E non si pensa pure che forse diventerà un problema per lui pure. लेकिन वो उस अपने बच्चे को बचाने के लिए उस मुश्किल के अंदर घुस जाता है। Però il padre va avanti e poi prova di salvare il suo figlio. बहन इसी तरह E così pure Dio, आसमान के खुदा ने जब हमको दुखों में, मुसीबतों में, गुनाहों के अंदर तड़पते हुए देखा il Dio dal cielo, quando ha visto il suo popolo che sta in peccati, तो उसको हमारे साथ मोहब्बत थी। lui amava così tanto a noi. कैसी मोहब्बत थी? Che amore c'era questo? यूहन्ना 3:16 के अंदर लिखा हुआ है, Giuseppe 3, Giovanni 3, जवानी 3 versetto 16, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी che Dio ha amato così tanto mondo कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। che lui è servito il suo l'unico il figlio per कैसी noi. अजीम मोहब्बत है। Che grande amore è questo. मुझे कल याद है, 2 दिन पहले मुझे याद है, 2 giorni prima io ricordo, मेरा भाई है पाकिस्तान के अंदर, io ce l'ho un fratello in Pakistan, उसके 2 बेटे हैं, lui c'era 2 figli, लेकिन उसका एक बेटा जिसकी उम्र 22 साल थी, ma suo un figlio che lui ce l'ha una età di 22 anni, वो अचानक खुदावंद में सो गया e lui è andato sul Dio in 2 giorni in quel और partito. आज उसका जनाजा था Oggi era un funerale di lui और हम भी e anche io, और उसके माँ बाप भी anche il तड़प genitore di रहे थे, lui ci avevano un grande dolore. तड़प रहे थे। इकलौता बेटा नहीं था, 2 बेटे हैं उनके Non c'era पास। l'unico figlio, però c'erano 2. एक बेटा तो खुदावंद में सो गया, Uno figlio è stato एक dormito in बेटा Dio, अभी उनके पास है, लेकिन उस बेटे का दर्द बर्दाश्त नहीं हो però रहा, un altro figlio ancora loro c'hanno, però quello che è morito, è इसलिए कि वो morto, दूसरा भी उसका लगते जिगर था।
loro hanno un dolore tanto perché loro amavano anche quello secondo figlio. लेकिन कलाम खुदा बताता है Però la parola di Dio dice कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा unico figlio però la parola di Dio dice che Dio è servito suo l'unico figlio per noi. सिर्फ एक बेटा L'unico figlio. उसको भी दे दिया Anche quello è dato per noi. उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया उसके पास एक ही बेटा उसके बाद कुछ भी नहीं था Lui उसके c'era पास solo l'unico figlio, non ce n'ha nulla più di quello. Però Più Dio da ha dato per Dio noi. è. Perché è dato per noi? आगे अल्फाज लिखे हैं ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए E poi è scritto dopo che quello che fedono in questo, su Gesù हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी non si पाए। morirà, però ci prenderà ये una vita है interna. उसने अपना इकलौता बेटा दिया इसका मकसद ये है Per quello missione lui ha dato questo l'unico उसने figlio. मेरे लिए अपना इकलौता बेटा दिया है Lui ha dato per me il suo figlio. उसने आपके लिए अपना बेटा दे दिया Lui ha है dato per voi il suo figlio. और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है E non è solo per noi, ये सिर्फ आपके लिए नहीं non è है solo per noi, बल्कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी però per tutto il mondo. ये सारी दुनिया के लिए है Questo è per tutto il mondo. लेकिन हमको तो वो बेटा मिल गया Però a noi, noi abbiamo avuto questo तो क्या figlio. हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई E poi la nostra responsabilità è कोई finita. जवाब दे सकता है हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई Può rispondere qualcuno che la nostra responsabilità adesso è finito? No. No. अब इस बेटे को दूसरों तक लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी Allora la nostra responsabilità è che quella notizia che abbiamo avuto dal suo figlio dobbiamo portare avanti. और मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहता Però हूँ voglio dire anche un'altra cosa, कि कलीसिया के अंदर che in chiesa चरवाहा जो है वो भेड़ों की अफजाइश का बायस नहीं होता il pastore non è responsabile per il crescere di pecore. या चरवाहा जो है वो बेबी शीप जो है उनको जन्म नहीं देता Il pastore non si fa nascere le piccole pecore, सी बल्कि भेड़ें जो हैं वो भेड़ बच्चे को प्रोड्यूस करती है però le pecore producono le altre pecore. ये कलीसिया की जिम्मेदारी है Questa è la responsabilità di ये खुदा chiesa. के लोगों की जिम्मेदारी है Questa è ये responsabilità del popolo आपकी di Dio. जिम्मेदारी है Questa è responsabilità del vostro. आपको लोगों को खुदा के घर में लेकर आना है Questa è responsabilità vostra che dovete आपने portare, लोगों को यीशु की गवाही देनी है dovete portare persone in आपने chiesa. जाकर यीशु के बारे में लोगों को बताना है Voi dovete dare la parola di Dio alle persone. इसके लिए दो तरीके हैं Ci sta due possibilità per quello. एक तरीका तो वो है जो नेचुरल तरीका है कि इंसान जो है बाय बर्थ अपनी कलीसिया को बढ़ाता है बच्चे पैदा होते हैं और खुदा का काम फटता है Una è possibilità naturale che le umani fanno nascere gli altri umani, così cresce la Chiesa. लेकिन दूसरा तरीका जो है वो कलीसिया के अंदर जो है बड़ा मौसर है E poi un'altra possibilità è più affettivo. इस तरीके को जब हम देखते हैं कलाम खुदा में Quando noi vediamo questa possibilità, तो जब मुकद्दस पतरस रसूल ने रूहुल कुद्स को हासिल किया quando il Pietro ha avuto lo Spirito Santo और एक ही दिन में जब उसने कलाम सुनाया e quando è condiviso la parola di Dio con le persone, तो एक ही दिन में 3,500 के करीब लोग कलीसिया के अंदर शामिल हो गए poi in ईमान ले un आए। giorno 3500 persone sono uniti in chiesa di Dio. और जिन्होंने कलाम को कबूल किया E quelli che hanno accettato il वो parola कलाम di को Dio, कबूल करके सो नहीं गए e quando hanno accettato dopo non hanno dormito, बल्कि वो ईमानदार भी आगे बढ़े और उन्होंने रसूलों की मदद की poi hanno fatto crescere più chiesa. और बहुत सारे लोगों को वो लेकर रसूलों के कदमों में आते और लोग बरकत पाते और कलाम को सुनते थे Hanno portato tante altre persone in chiesa e davanti और al कलीसिया Santo. बढ़ती जाती थी E poi chiesa è cresciuta tanto. इसलिए कि उन्होंने इस कलाम को पढ़ा था Perché cresceva, perché वो hanno letto जानते questa थे कि खुदा parola. हमारे साथ है Loro sapevano che il अगर Dio हम con noi. खुदा को अपने साथ रखते हैं Se noi mettiamo Dio con noi,
तो फिर हम बहुत सारी भेड़ों को यीशु के लिए पैदा कर सकते हैं। poi noi possiamo fare nascere tante pecore per Dio. और आपको वसाइल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। Ma voi non dovete preoccupare per le possibilità. आज जब मैं पाकिस्तान में था तो मैं सोचता था कि मेरे लिए यूरोप के अंदर जाकर खिदमत करना बड़ा नामुमकिन है, मैं तो वीज़ा भी नहीं ले सकता, मैं तो गरीब आदमी हूँ। E quando io stavo in Pakistan pensavo che per me sarà molto difficile andare in Europa e मेरे condividere la पास parola तो di टिकट के Dio. लिए भी पैसे नहीं थे। Io sono una persona povera, non c'avevo nulla. लेकिन जब खुदा का इरादा हुआ, Ma quando Dio ha deciso खुदा la ने mia मुझे vita, यहाँ पर पहुँचाया और मैं यहाँ पर खुदा का काम कर e रहा हूँ। poi Dio mi ha portato qua, adesso io davanti a voi sto Lekin jab condividere hame- parola di Dio. लेकिन जब हम इस हिस्से को पढ़ते हैं Ma quando leggiamo quel parola di Dio, तो ये हिस्सा पूरा हुआ और खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया और वो हमारे साथ रहा। questa parola di Dio è stato completato perché Dio è già लेकिन mandato अब il suo थोड़ी सी figlio आगे tramite देखें, noi. अब थोड़ा सा आगे देखें Adesso dobbiamo andare avanti. तो बेटे ने क्या कहा? Chi aveva detto il figlio? बेटे के क्या अल्फाज थे? Chi aveva detto il figlio sul suo बाप ने padre? कहा इमैनुएल मैं तुम्हारे साथ हूँ। Il padre ha detto a Manuel, che significa che io sono con तो voi. इमैनुएल ने आपको क्या कहा? A Manuel che aveva detto? तो बता सकता है? आदम जाओ सब कौमों को शरीर बनाओ। इरशाद आदम। थैंक यू। इमैनुएल ने कहा अब मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। Manuel aveva detto che adesso io sono con voi, però dopo sarò dentro voi. आमीन। खुदावंद यीशु फरमाता है अब मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, E Gesù aveva detto che adesso sto camminando मुझे con voi. देखते हो, Voi potete तुम vedermi, मुझे महसूस voi करते potete हो, sentirmi, तुम मुझे छू सकते हो, voi potete toccarmi, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर हूँगा। ma dopo il questo io sarò dentro voi. उसके बाद जिस्म में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, Io non ci sarò come una corpa con voi, बल्कि मैं तुम्हारे अंदर आऊँगा रूह कुद्स की शक्ल में, però io sarò io diventerò spirito e poi sarò come Spirito ताकि Santo तुम्हारे con अंदर voi. जो खौफ है वो जाता रहे। Perché quella paura che ci avete dentro deve andare via. और ऐसा ही हुआ E poi è successo जब proprio रूह कुद्स così. नाज़िल हुआ Quando era disceso il Spirito तो जो Santo, शागिर्द जो हैं वो डरे हुए थे, खौफजदा थे। tutti i discepoli avuto उन्होंने paura. रूह कुद्स से कुव्वत पाई और जाकर कौमों के सामने खड़े हुए। Poi dopo hanno preso lo Spirito Santo e sono usciti in tutto il mondo e condividere parola di Dio. एक वक्त था जब मैं गैर कौमों के साथ बात करने से थोड़ा सा घबराता था C'era un tempo quando io non ci avevo paura di parlare con altre कि persone. किस तरह मैं जाकर खुदा के काम को बयान करूंगा। E come posso condividere parola di Dio? लेकिन अब मेरे कुछ इटालियन दोस्त हैं Però adesso ce l'ho alcuni amici और वो italiani, जाते हैं और वो छोटे छोटे कलाम के हिस्से तकसीम करते हैं ma ci hanno piccoli libretti con parola di Dio. और जब उनको पाकिस्तानी मिलते हैं तो उनको कहते हैं कि ये पादी साहब का नंबर है, आप इनसे फ़ोन करके इनसे खुदा के कलाम को सीख सकते हैं। A questi libri è scritto il mio numero di telefono. और जब वो मुझे फ़ोन करते हैं और कलाम के Questi miei amici italiani condividono con le persone questi libri e poi dicono che dovete parlare a questo numero che è scritto al libro. तो मेरा दिल खुशी से भर जाता है E poi io divento molto और felice. खुद ब खुद मेरे अंदर से कलाम जारी होता है ताकि मैं उनको सिखाऊं। Poi le persone quando chiamano, la parola di Dio esce automaticamente da me. तो पहले खुदा ने वादा किया कि मैं तुम्हारे साथ हूँगा, Prima Dio ha promesso che io sono con voi, लेकिन जो हमारे साथ था però quello che era con noi, उसने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारे अंदर हूँगा ma lui ha promesso che adesso sarò और dentro वो voi. आपके अंदर आने के लिए तैयार है। Ma adesso quello Spirito Santo è pronto a entrare nel vostro cuore. वो यहाँ पर मौजूद है Spirito di Dio sta qua. और वो चाहता है कि वो आप में आकर सुकूनत करे और अपने काम को जारी करे E Spirito Santo vuole riposare dentro voi per और andare वो avanti. उसी के पास आता है जो अपने आप को पेश करता है। Ma Spirito viene solo sulla persona che vuole avere il Spirito di इसलिए अपने Dio. आप को खुदावंद के हजूर दे दें
dovete essere pronto और उसको कहें कि तू मुझे इस्तेमाल कर e dite al Dio che Dio, io sto Apri qua a आपको पेश servirmi. अपने आप को पेश कर दे Portate avanti फिर वो आगे वो बख्शेगा e poi lui darà forza. खुदा आप सबको बरकत दे Dio vi benedica a tutti. Scusate, ho fatto prima volta, questo penso che voi avete capito. Gloria a Dio, alleluia. Grazie fratello Saman. Nauman. Nauman.